हाँ भाई, तो last class में I think I gave you a couple of questions. No? I wonder, I don't remember. Let me check. Check. Uh, हाँ, दिया है. हेलो, मैंने किया कि नहीं किया? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Am I audible? हेलो, हेलो, हेलो. हाँ भाई, तरन किया क्वेश्चन जो मैंने दिया था. So I think the first one was uh, around 10 kg, 2 kg. हाँ, बता रहा हूँ, पहले ये तो करो. mu equal to 0, mu equal to 0.5, and the second one was 10 kg, 2 kg, f is equal to कितना दिया था मैंने? 50, 60, 70, I don't remember. 40. इसीलिए नहीं किया मैं. फिजिक्स में कोई होमवर्क नहीं करता. चल अभी करो. Do this. You have to tell me the acceleration of both the blocks, right? That is the thing. And the friction between the two blocks is not going to behave like the friction between the 10 kg and the ground. अभी फिलहाल तो 10 kg ground में कोई friction है ही नहीं. But next question में आएगा. Not possible. ये क्या आंसर हुआ भाई आर्यन? शिविर ने सही किया. नीले ने भी सही किया. नीले and Shivin are absolutely right.
हाँ बिल्कुल सही प्रतीक्षा, बिल्कुल सही तरुण, यस। नहीं आ रहे हैं, गलत आंसर है, जीरो आंसर नहीं आया। नॉट पॉसिबल आंसर कैसे हो सकता है? क्या मैं 10 किलो का ब्लॉक रख सकता हूँ? क्या मैं 2 किलो का ब्लॉक रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन। हाँ चैतल बिल्कुल सही, गुड। तो दीक्षा पहले किसका बताया था? हाँ पार्थ सही है। 5/3 किसका बताया प्रतीक्षा? सब लोग 5/3 क्यों निकाल रहे हैं? 5/3 नहीं भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्टी? नहीं भाई, 30 आंसर नहीं आएगा। हाँ बात सही है।
क्या हो गया भाई, तुम लोग कल ही तो बताया था। देखो भैया, मैं फिर कर रहा हूँ क्योंकि अब इससे जो है और बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और मैंने आपको बताया था दैट आई विल टेल यू अनदर मेथड, राइट? So first let me solve these three questions using the method that I have already told you. Then I will discuss a new method. Whichever method you find more comfortable, you can choose. So what I'm going to do is that I'm going to say that they are both moving together and their acceleration is A. And I'm going to carry out my check. So for the 2 kg block, if they are both moving together, then I can consider them as a 12 kg block. And what I can do is I can say that look, the force on this 12 kg block is 20 newtons like this. बाकी vertical forces I'm really not bothered. नीचे कोई friction नहीं है, so opposite force कुछ नहीं है. So 20 will be equal to 12A. This means A is equal to 20 by 12, and 20 by 12 is equal to कितना होता है 20 by 12? ओहो, यहाँ से 5/3 आ रहा है क्या? ओहो हो। देखो भाई, जिन लोगों ने 5/3 आंसर दिया था, प्लीज सी. सो नाउ आई हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू चेक. Okay, I have to go back and I have to check. So either I can draw the FBD of the 2 kg block or the 10 kg block. Let me draw the FBD of the 10 kg block. The reason why I am drawing the FBD of the 10 kg block is that there is only one force acting on it, and that is friction. Right? Horizontal force. बाकी vertical तो लगी हुई है, which I am not really bothered about. So बिल्कुल हमेशा चेक करना पड़ेगा. यस, नहीं चेक किया तब फिर फायदा, फिर तो मेथड ही गया ना फिर तो. हाँ, तो F is equal to 10A, which would be equal to 50/3. But we know that between these two guys, we have already worked this out in the last class. F max is equal to 10 newton. So since here F is greater than F max, 50/3 is definitely greater than 10. This means that my assumption, yes, is wrong. And both the blocks will move separately. Now, the moment that we get a situation where both the blocks will move separately, we have to really go back and draw the FBD for each block now. So for the 2 kg block, we will have a force of 20 Newton here. We will have some normal reaction here. We will have 2G here. And here now the friction will be maximum because they are moving separately. Right? So since they move separately, the friction is equal to F max. Right? And for the other block, I'm only going to draw the horizontal forces. For the other block, friction will be acting this. So for this block, we will have 20 minus 10 is equal to 2A. That is A is equal to 5 meter per second square. And for this guy, we will have 10 is equal to 10A. I should actually call it A1 and A2. A2 will be equal to 1 meter per second square. Okay? Please remember that this is just
step one of a check that you are carrying out. अच्छा, sorry, हाँ सॉरी, आर्यन आर्यन तुम इम्पॉसिबल और इम्प्रॉबेबल और पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहा था। अगर ये आंसर दिया तो यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑफ कोर्स, राइट। ओके, नाउ लेट मी सॉल्व फॉर द अदर वन। इसका तो यहीं पे सॉल्व कर देंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन था, ये आया सबको ना समझ में? फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंख बंद करके नहीं करना है। सो यहाँ पे एफ मैंने लगाया 40 न्यूटन, यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 5। मैं पहले ही एफ मैक्स निकाल देता हूँ। एफ मैक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नाउ आई विल assume that the blocks have the same acceleration rate. So this means that we have a 12 kg block जिसमें 40 Newton force लगी है. So this tells me that 40 is equal to 12a. A is equal to 40 by 12. Now I have to go back and check whether friction has exceeded its maximum value or not. इस केस में I will draw the FBD of the 2 kg block. I don't want to draw the FBD of the 10 kg block. नहीं तो फिर मेरे को ये भी बनाना पड़ेगा उसमें. I'm just finding the easier way out. That's it. So for the 2 kg block now, there is a friction F. So we get F is equal to 2A, that is equal to 80 by 12. Right? Now, the question is that is 80 by 12 less than or greater than 10? F max की value तो 10 है. 80 by 12, is it less than or greater than 10? Obviously, 80 by 12 is less than 10. And since 80 by 12 is less than 10, this means that my assumption is correct. And both the blocks will move together with an acceleration of A, whose value is 40 by 12 meter per second. Right? ये आया सबको समझ में? अगर ये F max से कम आया तब कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये F max से ज़्यादा आया तो आपकी थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गई, आपको दोनों का एफबीडी बनाना पड़ेगा और वापस से दोनों के एक्सेलरेशन निकालने पड़ेंगे। लेकिन अब आपको फ्रिक्शन के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। Okay? चल, so let's do this one. You want a couple of minutes to do this one or should I solve it? You want a couple of minutes to solve this one? हाँ, करो करो, सॉल्व करो। 10 kg ब्लॉक में कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रही है ना खुशी? 10 kg वाले में, हाँ देखो मैं बना रहा हूँ। 10 kg वाले में हम उसका एफबीडी बनाएंगे पहले। फोर्सेस क्या लगी हैं? 40 इधर लगा है, एफ इधर लगा है, तो 40 माइनस एफ इज इक्वल टू 10a. F is equal to 40 minus 10a. 10 is 400 by 12. 40 minus 400 by 12. ये बताइए खुशी, this will be greater than or less than 10? 40 minus 400 by 12 कितना आएगा? लेस आ रहा है ना, लेस देन 10 है ना ये, राइट? सो इररिस्पेक्टिव आप इसके ऊपर ये चेक चला रहे हैं, यू विल ऑलवेज गेट द सेम। लेस देन 10 आया, यहाँ पे भी लेस देन 10 आया, इसका मतलब मेरा ये अजम्पशन बिल्कुल सही है।
हाँ सही है शुभ, यस। अरुण ये किसका आंसर बता रहा है, क्या बता रहा है? देखो भाई इसके दो आंसर आ गए हैं, तो मैं फिर से मैं आई विल हैव टू डू नाउ 10। कौन सा साइड चाहिए, विच क्वेश्चन में है, यही तो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन यही तो है। ओके, so I will assume now that the acceleration is a and the force acting on this is 20 newton in this direction, and now since acceleration is there and this is a single block, यहाँ पे अपने पुराने फ्रिक्शन वाले रूल्स लग रहे हैं। अगर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होएगी और एन की वैल्यू 10g होएगी, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। So we get 20 minus 10 is equal to 10a. A is equal to 1 meter per second square. I don't know whether this is the answer or not. To check whether this is the answer, okay, to check whether this is the answer, first I work out the F max value here. F max value क्या रहेगा यहाँ पे 0.6 है, so it will be equal to mu into n, which is going to be 5g. Right, so this will be 6 into 5, that is 30 Newton. This is the F max value. यहाँ पे इस 10 kg वाले ब्लॉक के, सॉरी 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर, 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे F लगा हुआ है सिर्फ, क्योंकि ये ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर ब्लॉक। So F is equal to 5a, which is 5 Newton, which is definitely less than F max. Therefore, my assumption is correct. Right? My assumption is correct. And the acceleration is 1 meter per second square. ठीक है, अभी थोड़ा क्लैरिटी आ रही है, क्लियर थोड़ा बहुत। मत चिंता करो, क्लैरिटी आ रही है तो अभी सब गायब हो जाएगा, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार 20 न्यूटन है और एक बार 100 न्यूटन है, और यहाँ पे 10 न्यूटन है, और दूसरी बार में यहाँ पे 10 न्यूटन। दो क्वेश्चन है इसमें, ब्लू में बी पार्ट लिखा है मैंने, ब्लैक में ए पार्ट लिखा है। देखो ऐसा है ना खुशी कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना,
इसमें फ्रिक्शन का एप्लीकेशन या फ्रिक्शन का जो प्लेसमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इस 10 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, है ना। अब आप इसको फिजिकली कैसे समझ सकते हैं? रिमेंबर यहाँ पे इंटरमेशिंग हुई हुई है ना, राइट। सरफेसेस का पीक्स एंड वैलीज इंटरमेश हुए हैं। तो जब मैं 10 kg ब्लॉक को आगे लेके जाऊंगा तो 2 kg ब्लॉक उसको रोकेगा, लेकिन 10 kg ब्लॉक उसको अपने साथ लेके जाएगा। So here there is no ambiguity in the direction of friction. Here as well, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया था वहां पे भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा है, ये नीचे वाले 5 kg के ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ऊपर वाले के ऊपर आगे लगेगा। जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था इसमें भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर लगा फोर्स तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन दिया है मैंने पहला पार्ट, उसमें आई डोंट थिंक उसमें भी कोई एम्बिग्यूटी एज सच आने वाली है। तो आपको क्या करना है कि ये राइट और लेफ्ट वाली फोर्सेस देखिए, ये 20 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। 20 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10। अगर एक्सेलरेशन होगा नीचे वाले 5 kg का वो टुवर्ड्स द राइट होगा, इसका मतलब जो ग्राउंड फ्रिक्शन लगाएगा 5 kg पे वो पीछे लगाएगा, लेट मी कॉल दिस F1। अब 5 kg और 6 kg के बीच में कहाँ पे 5 kg और 6 kg के बीच में कैसे फ्रिक्शन लग रहा है ये मेरे को आइडिया नहीं है, right? So what I can do is I can have a very nice, very simple guess, right? So 20 न्यूटन आगे लग रहा है, 10 न्यूटन पीछे लग रहा है, 5 kg तो राइट हैंड साइड में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ F2 5 kg के ऊपर लगेगा पीछे की तरफ, F2 6 kg के ऊपर लगेगा आगे, राइट। अगर कहीं भी एम्बिग्यूटी आ रही है यू कैन अज्यूम एनी डायरेक्शन, अल्टीमेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। जीरो, हाँ जीरो हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ।
Yes, good. So I think many of you have done this one. One more.
ओहो, मैं तब से बोल रहा हूँ। थैंक यू चेतन। और मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा ऐसा। So for the 11 kg block, I drawn the FBD. Uh, the force on one side is 10 Newton, and the other side the force is friction F1. But F max ये 10 न्यूटन इसलिए है क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज 20 माइनस 10। तो ये जो F1 मैक्स की वैल्यू है यही 11 न्यूटन। इसका मतलब ये F1 की वैल्यू भी 10 न्यूटन रहेगी और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा। मेरे को इसके आगे कोई चीज चेक करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। आई होप जिन लोगों ने चेक नहीं किया वो सतर्क हो जाएं। दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। You see, the moment I have concluded that friction at the bottom surface has not reached its maximum value. So friction at floor is not at its maximum value. This implies that the 5 kg block is stationary, and the moment you have that the 5 kg, the moment you have the fact in front of you that the 5 kg block is stationary, that means that these two surfaces are now following the same rules as before, because now this surface has become fixed, right? So I need to know whether the 6 kg block is moving or not. तो यहाँ पे F max की क्या वैल्यू है? F2 max is equal to mu, which is 0.5 into 6 into G, that is equal to 30 newtons, right? But on the 6 kg block, F applied is equal to 10 Newton only. This implies that acceleration of the 6 kg block will also be 0. All those people who gave me an answer of 0 for the first part, please understand this, that it was not a necessity. यहाँ पे ऐसा हो गया कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 आ गया, राइट? बट इट वाज नॉट ए नेसेसिटी। अगर मैं नीचे वाला सॉरी F2 जहाँ पे फ्रिक्शन लगा है 6 और 5 के बीच का म्यू, वहां पे म्यू को मैं अगर 0.1 कर देता तो आपके ये आंसर जो आपने दिया 0 का ये गलत हो जाता। अगर मैं ऊपर वाले म्यू को 0.1 कर देता तो नीचे वाला ब्लॉक अभी भी स्टेशनरी रहता लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक मूव करता, राइट? सो यू हैव टू कंसीडर, you have to be careful about these cases as well. अगर 100 न्यूटन लगेगा, अगर 100 न्यूटन लगेगा तो नीचे वाला ब्लॉक डेफिनेटली मूव करेगा, and I will consider both the blocks to be moving together, right? And I will go on a new slide for this. I will consider both the blocks moving together, and I will write down that look, there is a फोर्सेस क्या क्या लग रही है, पहले देख लिया जाए। 100 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, F1 मैक्स इधर लग रहा है, और F1 मैक्स की वैल्यू क्या है? 11। सो आई विल हैव 100 न्यूटन्स यहाँ, 21 न्यूटन्स यहाँ। So this will tell me that acceleration is equal to 100 minus 21 upon 11, which is equal to, what is 100 minus 21? बड़ी गंदी गंदी वैल्यूज दे दी मैंने। 79 by 11 meters per second. Now check. So let me draw the FBD for the
I don't know. I'll draw it for the lower वाला block. दोनों इक्विवेलेंट ही हैं. 100 न्यूटन इधर फोर्स लगा है और 11 न्यूटन इधर फोर्स लगा है नीचे वाले सरफेस की वजह से. F2 इधर लगा हुआ है और इसका एक्सेलरेशन इतना है. 100 minus F2 minus 11 is equal to M5 into acceleration. So what is the value of F2? 100 minus 11 minus 5 into 79 by 11. Now we know that F2 max is equal to 30. तो ये 30 से ज़्यादा है या 30 से कम है? Please tell me. Is this less than or greater than 30? 100 minus 11 minus 5 into 79 by 11. ये होएगा करीबन 77, 35 ग्रेटर है ना? ये ग्रेटर है. So this is greater than F1. So this means that the assumption is wrong. So I need one more page now, and in this one more page I'm going to write here 100 for this 5 kg block. Here I'm going to write 11. I'm going to write 30 for this 6 kg block. I'm going to write 10. Here I'm 30. So the acceleration of this guy will be 100 minus 30 minus 11 upon 5, which will be equal to 70 minus 11. 60, 59 by 5. 59 by 5. And here I will be getting 20 by 6. So A1 is roughly equal to 10.8 meter per second square, and A2 is equal to कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये? 3.3. राइट? ये किसी ने आंसर दिया था मेरे को. इलेवन पॉइंट फाइव 20 by 11. क्या है ये? क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ये सबको या सबके ऊपर से जा रहा है? 11.8 है क्या? हाँ सॉरी. Everybody is understanding or not? Please tell me. I will do it again. And there is another method. I've already told you there is another method of solving this. Maybe you will find that easy. Maybe you will find that more difficult. I don't know. But is this method understood? This method is basically consisting of the fact that you assume that everything has the same acceleration, everything is moving together as one block. And then you find that acceleration, and then you look at one block, any block, and you find out the acceleration, you find out the friction between the two movable surfaces using this acceleration that you have found. If this friction comes out to be greater than the maximum possible value, then obviously there is a contradiction in your assumption, and your assumption must be wrong. And if the friction comes out to be less than the maximum value, then there is no problem. Okay? कौन सा वाला आर्यन? कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला? इसकी बात कर रहा है निलय? चलो अब ये वाला ट्राई करो. हाँ शोना, मैं करता हूँ ना, अभी सॉल्व करता हूँ ना, मैं इसको सॉल्व करता हूँ.
ओके, हाँ नीले बोलो। सर मैं कह रहा था कि आपने जो पिछला क्वेश्चन किया ना, सर उसका सेकंड स्लाइड दिखाओ ना, सेकंड ये स्लाइड। वाला। हाँ सर। सर इसमें नहीं सर, अगला वाला, अगला वाला। हाँ सर, इसने आप में वो ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना, 5 kg। नीचे सर वाला। हाँ हाँ सर। तो सर आपने उसका कैसे लिखा वो थोड़ा नहीं समझा। चैनल खोल के सर 5 kg ब्लॉक। फीडबैक आ रहा है, म्यूट कर। 100 न्यूटन है, ये कहाँ से आया? ये इसके ऊपर 100 न्यूटन लगा है, पीछे 10 न्यूटन लगा है, और पीछे फ्रिक्शन लगा है। फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 11 न्यूटन। तो 100 न्यूटन आगे फोर्स लगा, ठीक है, 11। ये मैंने क्या किया, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, 30 क्यों लिया है यहाँ पे? ओ सॉरी, सॉरी मिला, हाँ ये 10 न्यूटन तो 6 kg वाले पे एक्ट कर रहा है ना। मैंने तो 5 kg का बनाया ना एफबीडी। तो 5 kg पे आगे 100 न्यूटन लगा है, पीछे F1 लगा है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 11 है, और F2 लगा है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 30। राइट। तो मेरे 5 kg वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ 100 न्यूटन फोर्स लगा, फ्लोर की वजह से फ्रिक्शन 11 लगा, 6 kg की वजह से फ्रिक्शन 30 लगा। आया समझ में? बोलो निलय, यस और नो। ये वाला करते हैं, आई होप सबने किया। ये वाले ब्लॉक को एक मान लो, और इसका एक्सेलरेशन ए समझ लो। Right? This is an assumption that we are starting with, and we are going to use contradiction if we get a contradictory result. That means that our assumption was wrong, and if we get a non-contradictory result, our assumption was right. 15, 15, 7. Since I have assumed acceleration, therefore here friction must be maximum, and F max is equal to 15 into zero point 0.1 into G, that is equal to 15. So if I write the equations, I will get 15G minus T is equal to 15A, ये वाले ब्लॉक के लिए 15G minus 15 is equal to 15A ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, and here I'll get T minus 7G is equal to 7A left वाले ब्लॉक. I add them up, 30G minus 15 minus 70G, that is 300. Okay, 30G minus 15 minus 70 is equal to 37. Right? सर रोप सेम नहीं है तो फिर टेंशन सेम कैसे है? Oh, thank you, thank you, thank you. Yes, minus T1. एक्चुअली मेरे को मालूम है ना कि वो कैंसिल होने जा रहा है, इसलिए मैंने कहीं पे दिमाग में था कि उड़ा दो सबको. But thank you. Yes, absolutely right. No problem. Good. So I get
कैलकुलेटर निकालने तो मेरे को 300 minus 15 minus 70 divided by 37, 5.81. So I get A is equal to 5.81. Okay, now all I have to check is कि ये 5.81 की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन का क्या हुआ, right? So I'm going to do this in blue. Then. Check. 10 kg वाले का बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी 10 kg वाले पे वो लगेगी T1, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो 15 लगेगी फ्रिक्शन की वजह से, और F लगेगी फ्रिक्शन की वजह से ऊपर वाले सरफेस पे जो हम चेक कर रहे हैं। तो इसका इक्वेशन बनेगा T1 माइनस 15 माइनस F इज इक्वल टू MA 10A। लेकिन अब T1 आ गया यहाँ पे, चूंकि T1 आ गया है तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाला इक्वेशन भी लिख देता हूँ। 15G, सेकेंड इक्वेशन में 15G कैसे आया, मेरा दिमाग जो है वो रात हो गई, मेरे ख्याल से सड़ गया है। हाँ सही बोल रहा है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 300 नहीं आएगा, 150 आएगा। सो आई विल गेट व्हाट, थैंक यू गाइस, तो मेरा दिमाग सड़ गया आज। 1.75 आ रहा है क्या? तो A इज इक्वल टू A is equal to 1.75। हाँ, सो ये तो मैंने सही लिखा ना, T1 माइनस 15 माइनस F। हाँ ये सही, नहीं 50, हाँ सही लिखा। और मैंने 15G यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, 15 वाले ब्लॉक का भी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन गेट रिड ऑफ T1। 15 ऐड कर दिया दोनों को, तो मेरे पास आएगा 150 माइनस 15 माइनस F इज इक्वल टू 25A। So F is equal to 150 minus 15 minus 25. Right, now please tell me the value, guys. Please tell me the value of F. I will meanwhile calculate F max. 0.5 into 5 into 10, 25। F क्या आ रहा है? 25A। 25A, A का वैल्यू 1.75। कितना आएगा F का वैल्यू? Will it be less than or greater than 25? That is what I want to find. 150 minus 15 minus, I think it will be greater than, right? 1.7, 91.25, greater than F max. This implies that assumption is wrong. Okay, and unfortunately I'm going to need another page for this. So now we will have a situation where these two guys will move separately. These two guys will move separately. 7 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg. Right? तो अब पहले हम 10 kg का बना देते हैं FBD. ओके, ठीक है।
10 kg वाले में क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? पीछे फ्रिक्शन 2 लगेंगे, एक 15 लगेगा, एक 25 लगेगा, और आगे टेंशन T1 लगेगा। और जो इक्वेशन आएगा वो आएगा T1 माइनस 15 माइनस 25 इज इक्वल टू 10A1, और इसके लिए आएगा 150 दैट इज 15G माइनस T1 इज इक्वल टू 15A1। 25A1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 150 माइनस 15 माइनस 25 कितना बताया? 125 माइनस 15 110, 110 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है। फिर उसके बाद से 5 kg का बनाते हैं एफबीडी। 5 kg के एफबीडी में जो फोर्सेस लगी हैं वो है T2 एंड फ्रिक्शन। जस्ट इनका जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी T2 माइनस 25 इज इक्वल टू 5A2 एंड 70 माइनस T2 इज इक्वल टू 7A2। T2 कैंसिल हो गया, 70 माइनस 25 इज 70 माइनस 25 इज 20 50 45 45 इज इक्वल टू 13A2। A2 is equal to, oh, definitely these questions are lengthy, और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं और भी लेंथी हैं, आई एम सॉरी, बट ये फ्रिक्शन का आखिरी पार्ट है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल चुके हैं ना, वो tan थीटा इक्वल टू म्यू, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन 1 बाई म्यू। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बीच का जो एंगल होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो सब टर्मिनोलॉजी है यार, वो सब तो पढ़ सर लो। हाँ 13 नहीं सर 12 होगा। फिर कुछ गलती किया क्या मैंने? हाँ सर 5 + 7 13 ही 12 था। ओह हाँ, sure, that's so अच्छा। Okay, right. So this is the explanation. Oh, chalo guys, one more. लग रहा है केक बनाया मैंने। देखो बैग टाइम मिलता है तो पढ़ाता हूँ, नहीं तो फिर अगली बार पढ़ाऊंगा। हाँ भाई, हमारे पास ये केक है, और ये केक 10 kg, and I want some nice numbers. Hopefully I'll get nice numbers. 6 kg, 4 kg. To make your lives easy, mu is equal to 0, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए। mu is equal to 0.3, mu is equal to I don't know, 4. Force applied, F is equal to 50 Newton. Find acceleration of the 3 blocks. Okay, now can you do it? Try to it yourself. Method is the same. थोड़ा और लंबा हो गया क्योंकि अब 2 पेयर्स ऑफ सरफेसेस हैं जो मूवेबल।
तो आपको जो चेक कैरी आउट करना पड़ेगा वो दोनों पे कैरी आउट करना पड़ेगा। निकाल दिया? अरे बाप रे शिवन, इतनी जल्दी? ऑफ सीवी खत्म कर दिया है क्या शिवन, फ्रिक्शन वाला? प्रतीक्षा कहाँ गई? गिरफ्त मार दिया क्या प्रतीक्षा? बड़ी जल्दी पार्क निकाला भाई तुम्हें, इतने अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलो 2 मिनट और का टाइम है।
ओके ओके, कोई बात, इसको ट्राई करो, ट्राई दिस वन। ये थोड़ा सा हेडेक वाले क्वेश्चंस हैं, बट एचसीवी में दिया हुआ है एक, एंड आपको जो सीए होगा और जो दूसरा वाला एग्जाम होता है उसमें ये हमेशा आते रहेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू। सब अलग अलग मूव करेंगे क्या? आई डोंट थिंक, आई डोंट नो। लेट्स अज्यूम 20 kg, 50 न्यूटन, और यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, लकीली फॉर अस। सो 50 is equal to 20 a is equal to 2.5 meter per second square. So now I have to check at two places. So check one, पहले 4 kg ब्लॉक के लिए चेक करते हैं। अब ये जो चीज मुझसे पहले पूछी गई थी कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। दिस इज सिंपल इन दिस केस। अगर 6 kg पे फोर्स आगे लगा है तो 6 kg पे 4 kg की वजह से फ्रिक्शन पीछे लगेगा, 10 kg की वजह से फ्रिक्शन पीछे लगेगा, एंड देयरफॉर the third law will give us equal and opposite reaction wale forces. So check one. For the 4 kg block, F1 is acting in this direction. So F1 should be equal to 4 into A, that is 4 into 2.5, that is equal to 10 Newton. Right? And let's work out the value of F1 max. So I'll just work it out here. F1 max is equal to 0.4 into 4 into G is equal to 16 Newton. So check one comes out. कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, ये 4 kg और 6 kg एक साथ मूव कर रहे हैं और उन दोनों का एक्सेलरेशन 2.5, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे आते हैं 10 kg वाले पे। 10 kg वाले पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं भाई? 10 kg वाले ब्लॉक पे केवल F2 एक्ट कर रहा है, राइट? सो F2 is equal to MA, and that is coming out to be 25 newtons. And F2 max, let's work that out. F2 max is equal to the normal reaction at that surface multiplied by mu multiplied by n. So F2 max is coming out to be 0.3 into the normal reaction, which will be 10 G, right? You have to be very careful. Normal reaction here will be due to these two blocks, right? 10 G. So this will be equal to 30 Newton. And check 2 also comes out very nicely. Therefore, my answer is absolutely correct. All the three blocks, they are moving with an acceleration of 2.5 meter per second square. All three blocks move with acceleration 2.5. आया समझ में? चेक 1 चेक 2 कैसे करते हैं? जब आप चेक 2 करोगे तो it is imperative that the normal reaction that you take between the second and the third blocks is equal to mass of the upper two blocks into G, normal reaction. And that also because केवल horizontal forces हैं यहाँ पे, vertical forces आ गए तब तो आप normal reaction भी वो नहीं ले पाओगे। मतलब अगर मैंने ये 50 न्यूटन को टेढ़ा कर दिया, then you will be in a world of pain then. तो फिर आपको जो है 10 और चीजें वर्कआउट करनी पड़ेंगी, राइट? सो be careful, be mindful. Even if you are not able to do the question, just by looking at the question, you should be able to predict. ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं छूना। That is also a very important trait
that you must develop. Luckily, all the three blocks were moving together. Uh, एक और इसीलिए मैं वीडियो कैमरा नहीं ऑन कराता हूँ, अभी सब लोग जो है वो बना रहे होंगे। इसका मास है, I want some good numbers. I will take 15 kg, 10 kg, 5 kg. Mu is equal. बताओ भाई शौनक, mu क्या होना चाहिए? Any number between 0.1 and I don't know 0.5. शौनक शिवेन क्या चाहिए mu यहाँ पे? 0.4. महक mu क्या होना चाहिए यहाँ पे? 0.2 का, चलो ठीक है 0.2. फोर्स कौन से ब्लॉक पे लगनी चाहिए प्रतीक्षा? कौन से ब्लॉक पे फोर्स लगाऊं? फिलहाल एक ही पे लगाऊंगा, दो वाले में नहीं अभी करा रहा हूँ। 5 kg पे लगाएगी, ठीक है। Force is being applied on the 5 kg block. And finally, कौन है जो कुछ नहीं बोलता है? सम्यक, कितना फोर्स होना चाहिए? एक नंबर बता मेरे को। कहाँ गया सम्यक? सुन रहा है कि सो गया है? हेलो, चलो ओके, सम्यक सो रहा है। कितना फोर्स लगना चाहिए सम्यक? बताना मेरे को, एक नंबर बताना बिटवीन 0 एंड आई डोंट नो 100, बिटवीन 50 एंड 100 बता। 50 एंड 100 बोल रहा हूँ मैं, 25 बोल रहा है। चल चल, सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द थ्री ब्लॉक्स।
हाँ, एक क्वेश्चन है ना ऐसा, सीधी अगर खोल के देखोगे, आई थिंक these questions start, last 10 questions or last 12 questions are very nice, lengthy, and फिर से एक एक्सप्रेशन आ गया क्या सबका? आना तो नहीं चाहिए, देखो। I don't think there should be a single expression. नहीं नहीं, पार्ट ऐसे नहीं देखते हैं, मैं कैसे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन को मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, अगर F1 मैक्स निकालेंगे, तो 5 इंटू 10 इंटू 0.2 आएगा ना, दैट इज 10 न्यूटन आएगा ना। दिस इज वे बियॉन्ड 10 न्यूटन, राइट? चेक किया तुमने? तो यहाँ पे फोर्स बिलो 10 न्यूटन आ रहा है। ओ सबका, ओहो, तब पॉसिबल है भाई, देन इट इज पॉसिबल। 0.4 इंटू 15 जी, 15 फोर जा कितना होता है? 60। equal to 5 कैसे चेक किया मुझे तो नहीं समझ आ रहा है पार्थ। थर्टी जी। जल्दी से निकाला आंसर। इफ यू टेक दिस एज वन ब्लॉक, राइट? नहीं महक, इम्पॉसिबल है ना ये आंसर जो आप बता रहे हो। इफ यू टेक दिस एज वन ब्लॉक, वही शौनक, इम्पॉसिबल है जो आप बता रहे हो। 30 kg का एक ब्लॉक रहेगा, इसके ऊपर फोर्स 25 न्यूटन का लगा है, और फ्रिक्शन भी तो लगा है ना नीचे वाले सरफेस से, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 है। तो ये तो चुपचाप यहाँ पे इसको मैच कर देगा। एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी 0 at least for the 15 kg block. Acceleration will come out to be 0 at least for the 15 kg block. हाँ, नीचे आंसर है। अब ये देखना है कि 10 kg ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। अगर 15 kg ब्लॉक स्टेशनरी है तो ये सरफेस भी स्टेशनरी हो गया। अगर 15 kg ब्लॉक स्टेशनरी है तो ये सरफेस भी स्टेशनरी हो गया। इसका मतलब कि 10 kg वाले ब्लॉक के ऊपर मैं नॉर्मल मैकेनिक्स जो अपने सीखी है पहले से वो लगा सकता हूँ। तो 10 kg ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो F1 मैक्स इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा। F1 मैक्स की वैल्यू तो केवल 10 है और F2 की वैल्यू 60 तक जा सकती है। तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। अब मुझे 5 kg के लिए चेक करना है। अब ये भी स्टेशनरी हो गया। नाउ दिस आल्सो स्टेशनरी, राइट? नाउ आई टू चेक फॉर द 5 kg ब्लॉक। 5 kg ब्लॉक पे 25 न्यूटन लगा और F मैक्स 10 न्यूटन है सिर्फ।
5 kg वाला एक्सेलरेट करेगा और इसका एक्सेलरेशन 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 रहेगा, which is 3 meter per second. None of the blocks will move except the top one. Only the top block will move. No other block will move. Okay, right? ये आया समझ में महक? Is this clear now? मिडिल ब्लॉक में क्या हो रहा है कि केवल फ्रिक्शन लग रहा है, राइट? अब अगर 25 न्यूटन 5 केजी के ऊपर इस डायरेक्शन में लगा है, लेफ्ट में, तो 5 केजी के ऊपर 10 केजी का फ्रिक्शन राइट में होना चाहिए, यानी कि F1 इधर होना चाहिए, राइट? अगर F1 इधर है 5 केजी वाले ब्लॉक के ऊपर, तो 10 केजी वाले ब्लॉक के ऊपर F1 इधर होएगा। इसका मतलब कि 10 केजी वाले ब्लॉक पे F2 इधर होना चाहिए, इस पे F2 इधर होना चाहिए, इस पे F2 इधर होना चाहिए। तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू 60 है, लेकिन F1 की तो मैक्सिमम वैल्यू 10 ही है ना। और ये, हाँ, इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि F2 तो 60 हो सकता है। प्लीज नेवर गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। The force which is being generated from the top. इसका मतलब ये हुआ, जब मैंने 25 न्यूटन फोर्स लगाया, when I applied a force of 25 newtons, then this friction developed. Because this friction developed, therefore this guy came along. ये तो आना ही है, तो एक साथ आएंगे एक्शन रिएक्शन के। Because this guy was there, therefore friction here developed, and its action reaction pair developed. And because the friction here was there, therefore the friction on the ground developed. This is the chain in which this is happening. If we go to the previous question and ask the same thing, तो जब मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाया यहाँ पे, तो ये F1 और F2 आ गए और इनके एक्शन रिएक्शन पेयर आ गए। ठीक है, यहाँ पे चेन खत्म हो गई। मैंने फोर्स लगाया, दोनों ने ऊपर नीचे वाले ब्लॉक ने दोनों ने इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया और दोनों के ऊपर फ्रिक्शन लगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर वाले पे फोर्स लगाया। ऊपर वाले पे जब फोर्स लगाया तो पहले इधर फ्रिक्शन डेवलप होएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस होएगा ये, उसका कॉन्सिक्वेंस होएगा ये, उसका कॉन्सिक्वेंस होएगा ये, उसका कॉन्सिक्वेंस होएगा ये। तो F1 बेसिकली 10 केजी वाले ब्लॉक के ऊपर F अप्लाइड, F1 डिसाइड करेगा F2 की क्या वैल्यू हो सकती है। F1 की मैक्स वैल्यू 10 है, तो F2 की वैल्यू भी 10 तक जा सकती है। ऑल्दो F2 मैक्स 60 न्यूटन है, लेकिन F2 की वैल्यू केवल 10 तक जा सकती है, क्योंकि 10 केजी पे जो F अप्लाइड होएगा वो केवल 10 लग सकता है। चलो, so let me quickly then talk about method 2. So in method 2, let me go back to the first question that we discussed. So we have 2 kg 10 kg, इसके ऊपर फोर्स लगा था 10 न्यूटन का। यहाँ पे म्यू की वैल्यू थी 0.5, यहाँ पे म्यू की वैल्यू थी 0। चलो ध्यान से देखिए। So what I do is that I forget about this and I say that I am just applying a force. Yeah, so I forget about the force that has actually been
actually been force that has actually been applied on the question, like the force that has been given in the question, right? You forget about that. Then what you say is that look, I know that the two blocks will move separately when the friction between these two surfaces reaches its maximum value. Okay, so I know that at that point, at the boundary condition, friction between surfaces will be F max, right? But A1s will still be equal to A2. This is the boundary condition. तो ये बाउंड्री कंडीशन जब अचीव हो जाएगी, उसके इससे ज्यादा फोर्स मैंने लगाया अगर, तो दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करने लगेंगे, और उससे कम फोर्स अगर लगाया तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे. अब मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों का एफबीडी बना लूंगा. यहाँ पे फोर्स एफ लगाया, यहाँ पे एफ लगाया, यहाँ पे एफ लगाया. वर्टिकल फोर्सेस मैंने नहीं ड्रॉ. उसके बाद से मैं दोनों का सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखूंगा. एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2a1 एंड इसके लिए लिखूंगा एफ इज इक्वल टू 10a2. प्लीज नोटिस that I have taken the friction as F and acceleration as A1 and A2. Okay. So at the boundary condition, F is equal to F max and A1 equal to A2. So I will just put this here. I will just put this here. I know that F max is equal to 10 newtons. So F minus 10 is equal to 2a and 10 is equal to 10a. मैंने ये बाउंड्री कंडीशन इन दो इक्वेशंस में डाल दी. जब बाउंड्री कंडीशन इन दो इक्वेशन में डाला तो मेरे पास a की वैल्यू 1 आई और f की वैल्यू 10 plus 2 that is 12 न्यूटन. So we call this force the critical force. क्रिटिकल फोर्स से मेरा ये मतलब है कि ये फोर्स जब आप अप्लाई करोगे तो आप ये बाउंड्री कंडीशन अचीव कर लो. और अगर आपका गिवन फोर्स इससे कम है, if the given force is less than this, then you will say that look, I will consider both the blocks as one because I know that the force is not up to that level where separation will occur. अब जब एक सरफेस स्टेशनरी रहता था तो ये सारे लोचे होते ही नहीं थे क्योंकि एफ अप्लाइड की वैल्यू से हमें फ्रिक्शन पता चल जाता था. अगर एफ अप्लाइड म्यू एन से ज्यादा है, काम खत्म हो गया, फ्रिक्शन तो खत्म हो गया, म्यू एन हो गया, बॉडी मोशन में आ गई. लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों सरफेसेस मूवेबल हैं, इसलिए ये केस अप्लाई नहीं होएगा. दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल. एंड एज इज वर्कड आउट हियर एट द बॉटम, when you apply a force of 12 Newton on the 2 kg block, the friction will reach its maximum value. Any force below 12 Newton will make the two blocks move together. Any force above 12 Newton will make the two blocks move separately. So if you remember the first question that I gave in the last class, the force was 10 Newtons. Right? I will just write this down. If given F is less than the critical value of force that you have found, then A1 is equal to A2 and F is less than F max. And if the given value of force is greater
than the critical value that you have found. Critical. Sorry about the spelling. Then A1 is not equal to A2, but definitely F is equal to F. तो मेरे को अगर उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन में 10 न्यूटन फोर्स लगी है और मेरे को मालूम है, मैंने वर्कआउट किया कि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फोर्स तो 12 न्यूटन है, तो अब आप 10 दे दो, 9 दे दो, 11 दे दो, 8 दे दो, मुझसे कोई फर्क ही नहीं है। मेरे को मालूम है कि ये फोर्सेस पे दोनों ब्लॉक्स एक की तरह मूव करेंगे, तो मैं दोनों का एक्सप्रेशन झट से निकाल दूं। इक्वालिटी के तो हमने डिसाइड ही कर दिया ना, इक्वालिटी के लिए तो A1 इक्वल टू A2 है ही है ना। इक्वालिटी वाली कंडीशन ही तो बाउंड्री कंडीशन है, वहीं से तो हमने अपना निकाला ना वैल्यू उसका क्रिटिकल फोर्स का। तो ये वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको जो आज हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, इसमें तो ये 20 न्यूटन है, इसमें तो ये फोर्स 20 न्यूटन है, ये 12 से ज्यादा है। मेरे को मालूम था कि ये दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे, और सेपरेटली के लिए दोनों के लिए अलग से हमको एफबीडी बनाना है। और आप देखो इसका फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों में मैक्सिमम की हुई है और एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग की हुई है, राइट। The work involved in both cases will be same, because here what you have done is you found the acceleration assuming that they were 1, and then you found the friction which came out to be greater than the maximum value of friction. Therefore you came to the conclusion that the blocks will move separately. Right? Same thing here. Same thing. Instead of doing a check कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो मैक्स पहुंच चुका है नहीं पहुंच चुका है, what you are doing is you are going the other way around and you are saying कि अच्छा ठीक है, let me find that particular value of force जिसके लिए ये फिनोमेना होता है। और अगर वो वैल्यू ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर निकाल दिया हमने, then we can compare with the given value of force to come to a conclusion which we were coming before, right? And we can try all questions like this. We can try all the questions in the same way. एक Okay, so please just try these questions in this way. Find the critical force, and you can do it for all the questions except these ones. यहाँ पे forces ज़्यादा रहती है ना, यहाँ पे you cannot do this. यहाँ पे you have to rely on the first method only. But जहाँ पे एक ही force given है, वहाँ पे immediately you can go for the second method. ठीक है? Three surfaces पे बिल्कुल same रहेगा. So what you will do is here you will forget about this given force 25 Newton. You will just write an F there, right? And you will find out the critical force for which. Now यहाँ पे दो critical forces होंगे. पहली critical force होगी जिससे कि ये दोनों पे friction maximum हो जा रहा है, और दूसरी होगी जिससे एक पे हो रहा है. You have to find both the forces, right? You have to find both the critical forces.
आपके ऊपर है कौन सी आपको मेथड यूज करना है. आई विल शो यू बोथ द मेथड्स and we will then you have to decide which is the method that you want. चलो I will stop here. मैं थक गया और please complete HCV, right? Next class में again I will continue with this. I will show you how to apply the second method on these 3 block systems once again, and then we'll start with work energy theorem or circular motion. I don't know whichever. Impulse comes much later, Tarun. Impulse comes in the chapter of center of mass. We'll study that there. अभी नहीं. Impulse पढ़ने में भी 2 चैप्टर बचा हुआ है. 2 chapters are remaining. हाँ, मैसिव रोप्स में कल करा दूंगा. नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा. मैसिव रोप्स में कुछ करना होता नहीं है, बट ठीक है. चलो I'll go now. बुकलेट और एचसीवी हो जाए ना आर्यन, तो फिर इरोडोव करना है. नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट क्लास. आई इरोडोव करके किताब आती है, दैट यू हैव टू डू. चलो ओके. I'll see you guys in the next class. Bye bye.